अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदोर डोस्टोव्स्की। इनका ये नावल है। पहले हमने एक नावल डिस्कस किया चेरी ऑर्चर्ड, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट इज़ अ नावल विच इज़ रिटन बाय फ्योदोर डोस्टोव्स्की. Dostoevsky was a Russian novelist and short story writer. You will find some psychological writing in his work. He had great influence on 20th century fiction. He regarded as one of the finest novelists who ever lived. Born on 11 November 1821, died on 9 Feb 1881. It is regarded as one of the great work from his mature period of writing. This novel focuses on the mental health and the moral conflict of Raskolnikov. He was an ex student. अच्छा इनके वर्ड्स बड़े टफ हैं रशियन लिटरेचर में ना सबके. Raskolnikov. He was an ex student in St. Petersburg, planned to kill and pawnbroker, जो कि लोन का काम करती थी. उन औरतों को इसने मार दिया था, जिसकी वजह से इसको अपनी सारी ज़िंदगी में डाउनफॉल का शिकार रहा है ये. He thinks that Aliona डेथ विल बेनिफिट सोसाइटी. उसने ये सोचते हुए उनको मार दिया कि इनकी जो डेथ है वो सोसाइटी को फ़ायदा देगी. ही बिलीव्स दैट ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. और वो इस थ्योरी पे, इस मिथ पे यकीन रखता था कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है एंड कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द स्पिरिचुअल ड्यूटी ऑफ यूजिंग बैड मेथड्स टू अचीव ह्यूमनिस्टिक गोल. अच्छा गलत चीज़ों को तो नहीं ना फिर यूज़ करके वो ऐसे ह्यूमनिस्टिक गोल को अचीव कर सकता था. उसने अभी उनको मारा. ही वाज दिस नावल वाज पब्लिश इन दिसंबर 1866. Raskolnikov had nightmare of guilt. अच्छा जब उसने उनको मार दिया था फिर उसके बाद उसे ख्वाब आया करते थे बुरे बुरे, मतलब कि वो गिल्ट महसूस करता था एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन कि मैंने ऐसा क्यों किया. थर्ड पर्सन रिटन यूज्ड इन दिस स्टोरी. Themes in this novel, crime and punishment. The first one is alienation is an important theme in this novel. Several characters struggle with being isolated and cut off themselves from others. बहुत से कैरेक्टर्स अकेले रहते थे, अकेले रहना पसंद करते थे और दुनिया से कट ऑफ थे. Raskolnikov alienates himself from those who are around him psychologically, mentally and socially. As a student and after leaving school, he has been restricted in his tiny room. स्कूल के बाद वो जस्ट अपने एक ही कमरे में, छोटे से कमरे में रहता था. वहीं सारी ज़िंदगी उसने वहीं पे गुजारी. हिज एलिनेशन लीड्स हिम टू डू अ क्राइम. उसकी जो तन्हाई थी उसने उसको मजबूर किया एक जुर्म करने पे. ही सीज हिमसेल्फ एज डिफरेंट, इवन सुपीरियर, विच लीड्स हिम टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन. अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझने लग गया था, जिससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन का जो स्मिथ पे यकीन किया कि स्पिरिचुअल ड्यूटी को यूज़ करते हुए बैड एक्शन करके मैं कम्युनिस्टिक गोल को अचीव कर लूँगा. लेकिन नहीं, दैट्स नॉट ट्रू. Many other characters face alienation through poverty. Sonia is alienated from her family. सोनिया खुद उसने पूरी फैमिली का खर्चा उठाया हुआ था, तो वो इतना वो उसमें आ चुकी थी ना मेंटल, इतनी वो कोई ऐसे स्टेज पे चली गई थी कि किस तरह मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं. तो ना चाहते पे भी उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम स्टार्ट कर दिया था टू सपोर्ट हर लव्ड वंस. Raskolnikov also avoid his mother, sister and Sonia, his loyal beloved. He finds himself alienated throughout the story until he accepts Sonia's love. Crime is another important theme in this novel. It's a novel. Dostoevsky explores it in a broad sense, like how crime brings needless suffering upon oneself and others. For example, commit the murder. He has a theory that extraordinary man can commit crimes. वो इस बात पे यकीन रखता था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन जो होता है वो क्राइम, जुर्म जो है वो कर सकता है और वायलेट द मोरल बाउंड्रीज विदाउट पनिशमेंट. ऐसा तो नहीं ना होता, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया तो उससे सजा तो मिलेगी, लेकिन वो इस चीज़ को सोच नहीं रहा था. बट व्हेन ही पुट्स दिस मिथ्स theory into his action, he finds that it's flawed and torture him and becomes his psychological crime and punishment. This novel focus on the middle point that a criminal is not always a bad person or a mentally ill. Raskolnikov commits a crime in the early part of the novel because he needs money to achieve greatness. He also thinks that if greatness comes with the murder, then every great man does it. This idea set him apart from the family. However, when he came to face the mental conflict, he comes to know that there is no Superman or supermind person. He didn't confess he did the murder until the end of the novel. एंड तक उसने ये माना ही नहीं कि मैंने जो है वो क्राइम किया, मैंने जो है मर्डर किया.
until the end of the novel. But after confession, जब उसने इकरार कर लिया कि मैंने जुर्म किया, मैंने मर्डर किया है, he sent to Siberia, उसको सजा के तौर पे साइबेरिया भेज दिया गया था. Moreover, the final confession of love to Sonia too makes him realize that he is a common person, he is not an extraordinary person. Suffering is another important theme in this novel. Raskolnikov suffered from mental torture after killing two women. Even Sonia suffered because of her father alcoholic addiction. The suffering destroyed Raskolnikov's mental capability. Sonia is a source of redemption for Raskolnikov. Sonia is the lover of Raskolnikov. Okay. Moreover, suffering also means to suffer from financial and physical hardship. Sonia is forced to do a prostitution for the same reason. Suffering leads to several parts like crime, illness, disease, poverty, cruelty, self-torture, alienation, rejection, and failure. Even characters in a crime and punishment suffer physically and morally. Suffering is often psychological in nature. In nature, many characters face inner conflicts and pain. He talks to himself in public and con- sen- continues saying in a bed without eating for days. Morality is the fourth most prominent theme in this novel. Morality is the conflict between tradition of Christianity and Russia. A rational concept of morality focus on reason and logic of the best path of ethical and social change. Tradition Christian belief were based in faith, suffering, sin, and redemption. Raskolnikov theory based on new morality, but tradition Christian focused on redemption through suffering in his path to the new life. Raskolnikov justifies his murder on a logical ground that he want to achieve greatness. That's why he commit suicide. He commit the murder. Morality of Russia doesn't allow him to murder for his desire of achieving greatness. Nihilism. Nihilism is an important theme shows through the character of Raskolnikov. Nihilism is the belief that life has no meaning and that tradition moral doesn't matter. Raskolnikov believed that some people like himself are extraordinary and have to right to break the laws if it benefits the society. This leads him to murder a pawnbroker, thinking it will prove this theory. After committing the murder, Raskolnikov experienced psychological trauma and guilt, showing that his belief in nihilism is flawed. He knows that living without principle causes sorrow and isolation. The character Sonia, who represents kindness and faith, help him to see that life doesn't have meaning and that we had to care for others. At first, Raskolnikov is a nihilist. Later, he फर्स्ट ऑफ पहले ये सोचता था कहने कि मैं एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन हूँ बट एट द एंड ऑफ द नॉवल आफ्टर सोनियाज लव वो उसको इस चीज़ पे ले आया कि ही इज़ एन कॉमन मैन, ही इज़ नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन. सो आई एम डन दिस वीडियो. काफ़ी डिटेल में मैंने थीम्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफ़िज़.